सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। और हिटमैन 3 के एक और गेम प्ले में वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ लास्ट वाला गेम प्ले आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और मैं इसी तरह मज़ीद गेम प्ले लाता रहूँगा। अच्छा भाई, तो आज जो हमारा गेम प्ले है वो हिटमैन का कैंपेन मिशन 4 है और फेयरवेल के नाम से मिशन है। इसके बाद एक लास्ट मिशन रह गया है अनटचेबल के नाम से, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्ले करेंगे। तो आज का जो गेम प्ले है वो है ये द फेयरवेल। इसको प्ले करते हैं। ओल्ड हैबिट्स इस गेम का 5th कैंपेन मिशन है। स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस गेम की। ग्राफिक्स काफ़ी इम्प्रूव हैं पहले 2 गेम से, हिटमैन 1 और हिटमैन 2 से। Buenos Aires International Airport this morning. Now watch this. Harold. Trail into the Diana. airport. But turns out that a top Providence operative owns a vineyard in the area. Don Yates, of infamous New York law firm Morgan Yates and Cohn. And get this, he's hosting his retirement party today. She's infiltrated them. She's sending a message. She needs my help. Could have fooled me. You don't know her. Anyway, if you're going after her, you'll need to deal with the Herald. Her name's Tamara Vidal, former CIA asset and political firebrand. She's a master of surveillance and the Constant's most trusted aide. She'll have eyes everywhere. You won't get far as long as she's in the game. Why are you telling me this? I thought you were out. Yeah. Old habits, I guess. अच्छा भाई, तो अभी इस मिशन को प्ले करते हैं। Rendezvous with Diana Burnwood in Mendoza and assist her allegiance। हमें डायना को सेव करना है इसमें। ऑब्जेक्टिव अप्रोच डायना बर्नवुड विद। अच्छा, ऐसे हम लोगों ने जो है डायना के साथ जाना है और उसे सेव करना है। तो इसको प्ले करते हैं इस मिशन को। डायना के साथ इस मिशन में हमें जाना है और देखते हैं क्या करना है हमें। कोई टारगेट है हमारा, कुछ जो भी है देखते हैं। लोकेशन तो काफ़ी ज़बरदस्त है और सिक्योरिटी काफ़ी टाइट लग रही है यहाँ पे। ये डायना खड़ी हुई है यहाँ पे, इससे जाके हमें मिलना है और अपना जो प्लान है इस मिशन का हमें वो एक्सप्लेन करते हैं इससे। अप्रोच डायना बर्न, अप्रोच करते हैं इसको, उसके पास जाते हैं और देखते हैं, से बात करते हैं। You got my message. You'd never get caught on camera. Not unless you wanted to be seen. So what's the play? You're not the only one who's been busy, 47. I'm this close to becoming the next Constant. I'll be able to dismantle Providence from the inside. Only one man stands in my way. Don Yates. That weasel was the partner's legal counsel for years. ये डॉन He's है, the top candidate. इसे मारना Remove होगा him हमें। from the playing field. It won't work. If Edward suspects, I will convince him you acted alone. Retaliation for Grey. Trust me, I know what I'm doing. the Herald, Tamara Vidal. She has eyes everywhere, and they're all fixed और on मेरे ख्याल से हमारा सेकंड टारगेट ये Plan होगा, won't work इसे unless you मारना take होगा। her out. She never leaves my sight for long. Whatever your plan is, I'll help you if I can. You're sure about this? As sure as I'll ever be. Here, I got you an invitation, just like old times. इनविटेशन, अच्छा इनविटेशन दे रही है पार्टी का। Come find me when it's done. अच्छा, इससे इनविटेशन ले लिया हमने। एलिमिनेट डॉन अर्चबाल्ड येट्स और एलिमिनेट टमारा वाइडल। अच्छा, 2 टारगेट्स हैं हमारे। डू नॉट एलिमिनेट डायना। ये उठा लेते हैं ब्रिक यहाँ से। अच्छा, ये पार्टी है काफ़ी बड़ी, यहाँ पे हम लोग आए हैं। इनविटेशन दे दिया हमें।
यहाँ से यहाँ इनविटेशन देते हैं अपना। Bienvenidos to Viñeda Yates, señor. May I see your invitation, please? गिव इनविटेशन। Gracias, señor. Enjoy the party. अच्छा है, पार्टी में आ गए हम लोग। और Señor, would you care for an aperitif? ये हमारा एक टारगेट जो है वो लड़की यहाँ सामने खड़ी हुई है, Tamara Vidal. I'm here for the tourists. लेकिन इसे यहाँ नहीं मार सकते। Miss Vidal, my apologies. I didn't recognize you. सेव हो गया गेम हमारा। I knew it. Luther, Burnwood's flying solo. I अब want यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये मिशन स्टोरी रिवील हो रही है। यहाँ खड़े होते हैं, ब्लेंड इन। That's right. Yates has arranged for the chief winemaker to take Burnwood and Tamara Vidal on a grand tour of the estate. Wants you to tag along. Not for my sparkling personality. This Burnwood woman sure has his panties in a twist. Wonder what the deal is. Yates' business is his business. Just get yourself ready and sign in with the visitor center. Oh, have a drink on my behalf. I don't drink. Makes me sentimental. F1 दबाते। A tour of the estate. Diana, Vidal, and this fixer, Corvo Black. Black is a threat, but also an opportunity. Yates's own machinations are inconsequential. Joining the tour will give access to Vidal, away from the crowd. Disguise yourself as Corvo Black। अच्छा, इसका डिस्गाइज करना है हमने इस बंदे का। इसको फॉलो करते हैं। Mr. Yates. Yeah, I got this. You mind telling me what I'm... मौका ढूंढ के इसको हम लोगों ने जो है Feels a party like your guests inexplicably dropping डिस्गाइज करना है। In fact, a couple of spots come to mind. On the tour or after. Stand by. So you're not sure? Does that mean there's a plan A? One where I don't stand a 50-50 chance of getting caught? I mean, you do realise the risk here, boss. Broad daylight, workers around. Who exactly? Right. It's a nice gesture, but But if I'm going to be one of these heralds, you need to start letting me in on a few things. Okay. So who's this fool guy? इसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे आएगा भी नहीं आएगा पता नहीं, फ़ोन पे लगा हुआ है। पता नहीं यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, इधर ही आ रहा है। इन्वेस्टिगेट करने आ रहा है। इसको मारते हैं और इसका डिस्गाइज करते हैं। इसकी बॉडी को यहाँ पे लाते हैं, डिस्गाइज करते हैं पहले और यहाँ पे डंप करते हैं। सही, ये डिस्गाइज कर लिया हमने इसका। टॉक टू रिसेप्शन। अब रिसेप्शन में जाते हैं, यहाँ से नीचे tell me you didn't forget yourself. और देखते हैं यहाँ पे कहाँ से, यहाँ से आए थे ना हम लोग। रिसेप्शन कहाँ पे है? Why do you have to be such a baby all the time? Looking sharp today, sir. I'm waiting. What are we supposed to यहाँ से आए थे। The dinner is late because the Yoda brothers forgot the torch for the gallon out of time. यहाँ से नीचे जाते हैं। Hello there, and welcome to the Yates Winery. Corvo Black. I'm on the tour. Right, Mr. Black. Welcome.
Miss Burnwood and Miss Vidal will meet you down by the wine fields. I trust you know the way. I can find my way around. Enjoy the tour. जॉइन द अदर गेस्ट्स। अच्छा, यहाँ पे उन लोगों को ज्वाइन करना है हमने अब जाके। One of the most gifted surveillance specialists ever to graduate. डायना को, और वो जो दूसरी एक और है, क्या नाम है उसका, जो भी। अभी यहाँ से, यहाँ नीचे हैं वो लोग, यहाँ से जाना नीचे। यहाँ से जाते हैं उनके पास। You ask me, the constant must have lost his mind. Burnwood was in league with Grey. She's responsible for उनको ज्वाइन करते हैं। Over here. You two must be Burnwood and Vidal. And you must be Yates's garbage man. Sorry, but I didn't catch your name. This is Corvo Black, Tamara. He's a ICA regular. I only work with the best. Well, we're all here, it seems. Except for our guide, the chief winemaker. Looks like we're stuck here until someone fetches him. Mr. Black, I'm looking in your direction. Hold on. I'll track him down. Attaboy. Do try and bring him back in one piece. Counterintuitive as that may be. इन्फिल्ट्रेट द That was a ग्रेप bit फील्ड। rude. Yes, yes it was. अच्छा, यहाँ पे जो अबे भाई, इन्फिल्ट्रेट द ग्रेप फील्ड। इन्वेस्टिगेट द होल्ड अप। इन्वेस्टिगेट करना है हमने। Huh? इसको वहाँ भेजते हैं डिस्ट्रैक्ट करके। Awesome. What is it now? What? You have some guests waiting. Senor Yates wanted you to give them the grand tour. Remember? If I don't have more important things to do than babysit Yates' socialite friends. It's only harvest season. Better do what he says, patron. Big shot New York lawyer like that. Don't want to get on the bad side. Well, I'm not going anywhere until I have decided if the crop is right for picking. Bring me the 3 Malbec grapes, thanks Ramon. If Yates doesn't like how I prioritize, he can weigh me down with concrete and toss me off a bridge. How's that? 3 grapes, was it? I'll get my picking knife. को इन्वेस्टिगेट करना है हमने इस जगह को। Well, great. Thanks, I guess. Seriously, who takes another man's picking now? डिस्गाइज एज अ वेज वाइन वर्कर। Gonna be one of those days, isn't it? इसको डिस्गाइज करते हैं। डिस्गाइज। इसकी बॉडी को कहाँ पे, यहाँ पे डंप करते हैं इसकी बॉडी को। देख तो नहीं रहा कोई। यहाँ पे इसको डंप करते हैं। अच्छा भाई, कौन सी नाइफ है यहाँ पे? एक्वायर ग्रैप। नाइफ, यहाँ पे नाइफ है कोई? ग्रेप पिकिंग नाइफ यहाँ पे पड़ी हुई है वो। यहाँ सब पहचानने वाले। यहाँ अंदर जाना किस तरह से? यहाँ से उठाते हैं नाइफ। हार्वेस्ट 3 राइप मेलविक ग्रेप पॉइंट्स। अच्छा भाई, यहाँ से हमने जो है 3 हार्वेस्ट करना है यहाँ से। यहीं से कहीं से जो है ना,
यहाँ पे तो नहीं, ये क्या पड़ा हुआ है? कहाँ से हार्वेस्ट करना है यार? ग्रेप वाइन्स। वाइन्स का बता रहे हैं, वाइन्स कहाँ पे होंगी? I heard the news this morning. Tough luck on that trade. यहाँ ये ड्रम तो नहीं पड़े हुए कहीं? Anything going on down here right now? And because I don't. यहाँ से करना है, यहाँ पे मैं वहीं घुमाई जा रहा हूँ कब से। हार्वेस्ट 2 2 रह गए, एक कर लिया हमने। बंदों से भी बचना है, यहाँ पे घूम रहे। 2 1 एक रह गया। यहाँ से एक हार्वेस्ट करते हैं। उस साइड पे अच्छा भाई, तीनों कर लिए। डिलीवर ग्रैब टू द चीफ वाइन मेकर। बंदे के पास जाते हैं, वाइन मेकर जो है, इसको देते हैं ग्रेप्स। Mr. Vargas, I have the 3 grapes you requested. Yes, good. Bring him here. Now, let's see. Lovely inky black color. इसको दे दिए ग्रेप्स। Large and firm. Seeds brown. Excellent. Finally, taste. Sweet, flavorful, robust tannins. Some floral notes. Marvelous. Why, I say these grapes are ripe for harvest. Inform the workers, will you, Ramon? I have a third to contact. Will do. डिस्गाइज एस कॉर्वो। अच्छा, अब दोबारा उसका डिस्गाइज करने कॉर्वो का। हाँ, यहाँ पे ज्वाइन द अदर गेस्ट। अब उनको दोबारा ज्वाइन करते हैं यहाँ से। पता नहीं चला यहाँ किसी को। अब इनको दोबारा ज्वाइन करते हैं। Ah, my fellow wine lovers. Hello. Welcome to Viñeda. Hello, partner. Gates. I do apologize for the delay. The Malbec grape is a demanding mistress. So, I am Gabriel Vargas, chief winemaker, and I will be your tour guide. Any questions before we start? Yes, but you're not going to like them. We're good. Lead the way, Senor Vargas. Wonderful. Follow me. These are busy times. In fact, we're just about to harvest this year's crop. फॉलो द Great चीफ expectations. वाइन मेकर। इसको फॉलो So, करते हैं। how do you like Argentina? Like everywhere else, full of Americans. First stop on the tour is the production floor, where our prize-winning Malbec grapes are processed. We insist on steaming every grape by hand, which means that during harvest season, the grapes do tend to pile up. Luckily, we have plenty of storage space. Our equipment is state-of-the-art, including an industrial-sized freezer unit, and last but not least, a trusty grape crusher. Interesting. Wouldn't you say, Mr. Black? Follow me, please. इसको फॉलो करते हैं।
टूर गाइड है हमारा यहाँ पे। Are you a wine man, Black? Somehow you don't seem the type. Oh, I believe Mr. Black here is something of a jack of all trades. Isn't that so? I dabble. I see. I just thought Yates might be sending a message. My mistake. So, have any of you been to our vineyard before? Only on business. Next on our tour is the fermentation atrium, where the wine goes through its primary stage of fermentation. In these big open tanks, ये वाइन की फैक्ट्री है, बहुत बड़ी converts वाइन the बनाते हैं यहाँ sugars पे। into wine to alcohol in a process that lasts between 5 and 15 days. This is also where we squeeze the mass into a fine juice using our grape presser before the longer secondary stage of fermentation. Fascinating. Now, before we move on, do any of you have questions? How about you, Mr. Black? You look like you have something on your mind. I have a question. It's... perhaps we can take a closer look. Certainly. Lead the way. अच्छा, अब इसको जो है हम लोगों ने इससे क्वेश्चन पूछने हैं कुछ हम लोगों ने। उसको यहाँ पे लेके आते हैं। आस्क अबाउट ग्रेप प्रेशर। What can you tell me about this device? Grape presser, was it? That is correct, senor. After primary fermentation, the mass is pressed through a fine filter, leaving only the flesh and skins behind. I should add that grape stomping, the iconic practice of crushing grapes with your bare feet, is historically rare and mostly a tourist gimmick. But you are most welcome to try. Imagine you're a grape. Thanks. I'll pass. Oh, go on. I'll take a picture of the three of you. Oh, come on, Tamara. When in Rome. Fine. अच्छा, इसको मेरे ख्याल से यहाँ पे खड़े होने मेरे ख्याल से। Say queso. May I see that, Mr. Vargas? I believe I blinked. फॉलो, इसको मारना होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से। So, this is what the little guy feels like. सेफ्टी मैकेनिज्म। No, all good. Looks like one for the mantle. Any further questions? Ask away. अच्छा, मुझे समझ आ गई। यहाँ पे जो है हमें इनको मारने के जो है तरीके ढूंढने। यहाँ उसको मार सकते थे लड़की को। समझ गया समझ गया समझ गया। इसको यहाँ ला के ना इस मशीन में डंप कर दे। यहाँ पे क्वेश्चन ढूंढ, मतलब है इनसे क्वेश्चन पूछने हमने, और मौका देख के उस लड़की को हम लोगों ने मारना है। यहाँ पे आके पूछते हैं क्वेश्चन। और I'm interested in these containers. Ah, yes. Our large fermentation tanks are constructed from solid French oak and each contain up to 5. मेरे माइंड में था उसको मारना है वहाँ पे, लेकिन नहीं मारा मैंने। Interesting. अब यहाँ पे जो है Those cooling sockets. They are indeed, senor. The cooling system allows us to fine-tune the entire process. एलिमिनेट करना है यहीं पे इनको। Temperature, humidity levels, etc. Our goal here at the Yates is quite simple. From the state-of-the-art winemaking facility to our carefully nurtured grape stock. डायना को नहीं मारना, उसको मारना है। डायना डिस्ट्रैक्ट करेगी इसको, और हम लोगों ने मौका देख के इसको मारना है लड़की को। टमारा वाइडल। Looks like an accident waiting to happen. Occupational hazard. Hey, Burnwood? इसको जो है मारते हैं यहीं पे। ड्रैग करके हाइड द बॉडी, इसको यहाँ पे डंप करते हैं। Let's continue to the barrel room. Follow me. चलो भाई, ये तो गई, ये गई। What happened to your colleague? Urgent call. Something about work. I don't think she'll be coming back. Oh well. अच्छा, Sure she can find her way out. Let's proceed. सही, ये तरीका था मारने का उसको।
किसी को पता भी नहीं चला और एक टारगेट हमने एलिमिनेट कर दिया। अभी एक टारगेट हमारा और है। Are you associates of Mr. Yates? You might say we run in the same circles. Law and order. Must be इसको very फॉलो exciting. करते हैं। It's about 99% preparation. And so we arrive to our final stop, the barrel room. This is where we store the wine during the secondary stage of fermentation. The area behind the glass is where we keep our most precious bottles, including a 1945 Grand Paladin, the most expensive wine in existence. The access doors, which are made from ballistic glass, can only be unlocked from the security room high above our heads. Remarkable. ये डॉन आ Here गया। comes Senor Yates now. I shall leave you in his capable hands. How reassuring. मिशन स्टोरी कंप्लीटेड। Don Yates, pleased to meet you. You come very highly recommended. As Chief of the Heralds, let me be the first to say welcome aboard. Why, thank you, Mr. Yates. Rest assured that I will be following your every lead very closely. Say, that reminds me. We're about to have a little Herald get-together up at the house. Just a modest toast to celebrate my forthcoming inauguration as Constant. You are, of course, most welcome to join us. I believe you shall make a fine Herald, once the training wheels are off. I wouldn't miss it for the world. Capital. Right this way, into the lion's den. Why don't you take a break, Corvo? We're done here for now, I think. Oh, but don't go too far. I may still need your services later. I'll be closer than you think. Oh, almost forgot. Cortazar, please nip down to the wine cellar and tell Mr. Flowers, the sommelier, to prep the 1945 Grand Paladin and bring it up to the house for our special occasion. Got it, Chief. अच्छा भाई ये है मिशन स्टोरीज, द टूर गेस्ट। अब ये बंदा है, गार्ड है यहाँ का ये। इसको फॉलो करना है, क्या करना है हमने? Flowers. Mr. Yates wants the 1945 Grand Paladin brought up to the house. अच्छा मिशन स्टोरी रिवील हो रही है। Special occasion. What? When did aliens land on the front lawn? Have the ghosts of Jesus, John Lennon, and Eva Perón unexpectedly come for dinner? Out here, what could possibly be so special? Above your clearance, Flowers. A meeting in the root cellar. And judging from Yates's choice of wine, some type of celebration. Likely a gathering of heralds come to congratulate Yates on his upcoming promotion. Diana's presence, a calculated risk. अच्छा ये मीटिंग बुला रहे हैं सारे, डायना भी होगी वहाँ पे। Just fetch it already. Fine. Last year of World War II. If you have to look it up, shame on you. अच्छा वो जो बंदा अंदर है उसका डिस्गाइज करना है हमने अब किसी तरह से। अब वहाँ तक जाना है हमने किसी तरह से, उसका डिस्गाइज करना है। अच्छा यहाँ से नीचे ड्रॉप करते हैं इसको। हाँ ये क्या है, इसको कैमरा से खोलते हैं। इंक्रिप्शन की स्क्रू ड्राइवर, दोनों चीज़ें नहीं है हमारे पास, ना तो वो है स्क्रू ड्राइवर नहीं है वरना ये खुल जाता है यहाँ से, और वो डोंगल होता है एक यूएसबी की तरह होता है। अभी हमें यहाँ से कहीं से स्क्रू ड्राइवर ढूंढ के लाना पड़ेगा, यहाँ पे तो नहीं पड़ा हुआ। नीचे जाते हैं जहाँ से आए थे, यहाँ पे क्या पता कुछ ना कुछ मिल जाए, क्योंकि हमें वहाँ पे एंटर होना है अंदर। दरवाजे तो वहाँ सिक्योरिटी रेंज उठाते हैं यहाँ पे, और ये कौन सी जगह है, यहाँ पे आते हैं। डोंगल, ये पड़ी हुई डोंगल, ये स्क्रू ड्राइवर, दोनों चीज़ें मिल गई। दोनों चीज़ें मिल गई हमें। यहाँ पे आते हैं अब,
और यहाँ से नीचे ड्रॉप करते हैं, इसको जो है कैमरा से खोलते हैं। खुल गया। डोंगल चाहिए था वो वाला हमें, या फिर स्क्रू ड्राइवर, इन दोनों से खुल जाता है लॉक। यहाँ 1945 ग्रैंड पैलेटिन, यहाँ से डिस्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ से ये फ्यूज़ बॉक्स लगा है, इसको ऑफ करते हैं। ग्रैंड पैलेटिन, अभी ये डिस्ट्रैक्शन। अबे भाई पकड़ा जाता है अभी। जल्दबाजी में थोड़ा अभी मसला आता है, जल्दबाजी कर रहा हूँ मैं। इसको डिस्गाइज करते हैं यहाँ पे। अभी डिसेबल द लेज़र्स, लेज़र्स को डिसेबल करना है हमने अभी। यहाँ पे 1945 ही लिख के देखते हैं। ये खुल गया, यस। ये बॉटल पिक करते हैं क्योंकि ये जो है ना वो 1945 इसका नाम है, वाइन का नाम है कोई, ग्रैंड पैलेटिन। इससे बात करते हैं, सिक्योरिटी हेड जो है। Sir, I present to you the 1945 Grand Paladin. Huh. Somehow I thought it'd be bigger. Come on, Flowers. Guests are waiting. फॉलो द हेड ऑफ द सिक्योरिटी, इसको फॉलो करते हैं। इसके साथ जाते हैं ऊपर तक। Go on, get yourself patted down. We're still on alert from all those big shot CEOs getting offed. I'm gonna need to frisk you if you want to come through here. अच्छा, फ्रिस्क यहाँ पे चेकिंग करेंगे वेपन की। अपने वेपन जो हैं सारे वो यहाँ पे ड्रॉप कर दें। जितने भी वेपन आइटम हैं ना, जो भी यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं सारे, क्योंकि वेपन नहीं लेके जा सकते हम लोग यहाँ पे। अबे फिर इसको उठा लिया। मेरे ख्याल से एक चीज़ को कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इलीगल आइटम, इसको हम लोगों ने कर लिया। Hello there, sir. I need to search you if you want to pass. फ्रिस्किंग नॉट अलाउड, इलीगल आइटम। एक मिनट यार, यहाँ पे ड्रॉप करते हैं सारे जितने भी यहाँ आइटम है ना, सारे जो वेपन है इलीगल है जो यहाँ पे। जो इलीगल आइटम है मेरे ख्याल से, और तो कुछ भी नहीं है इलीगल। अब चेकिंग करवाते हैं। Hey yo, there's no need to flex. You ain't got to impress me. वेपन सारे ड्रॉप कर दिए हम लोगों ने। Okay, everything seems to be in order here. Hey yo, get to stepping, Holmes. अच्छा, अब इसको फॉलो करते हैं, ऊपर जाना है यहाँ से। So here's the deal, Flowers. The boss is having a powwow with some employees, and discretion is the name of the game. I'm sure you figured that out already, you being a skull. ये इसको निकाल लेते हैं। All in all. Don't discuss, disclose, or hell even contemplate what goes down. Just set your mind to rule-gathering mode. You think you can do that for me, Flowers? Worry not, Mr. Cortazar. I'm the very soul of discretion. Good man.
के साथ जाते हैं। They're already at it. Go on, place the wine on the table. I'll pour it. I have always considered the heralds the unspoken heroes. अच्छा, यहाँ पे रखते हैं इसको, बॉटल को। Place the wine. Ladies and gentlemen, Mr. Flowers, our resident sommelier. I believe he has brought us something quite special. Perhaps you will educate us, Mr. Flowers. अच्छा भाई, इसको This is the 1945 Grand Paladin, one of only 5 bottles in existence. The vintage is legendary, the proverbial unicorn wine. The year was hot, the wine's super concentrated, and thanks to hail and frost, the production was small. Only 300 bottles were ever produced. And when the vineyard was bombed during the closing days of World War II, only a single crate survived. It is said to have amazingly complex aromas with long, savory layers of fruit and spice flavors, and a silky texture. Enjoy. Wonderful. Thank you, Mr. Flowers. Feel free to stick around in case our guests have questions. This wine was gifted to me by the Art Society in acknowledgement of my अब firm's मीटिंग को legal ऑब्जर्व करना है हमने। services. It stands as a powerful reminder that Providence draws its strength not from force, but from partnership. We are but a few, and yet together we are unstoppable, because we stand united. My friends, loyalty is everything, which is why we cannot allow traitors into our ranks. Ah, yes. Here it comes. This woman has waged bloody war on us. More than a dozen heralds and operatives dead. Your colleagues and clients, my friend Ken Morgan. Not to mention the partners themselves, our founders, our benefactors. Make no mistake, this woman's hands are soaked in blood. Our blood. And Arthur Edwards, the new supreme head of Providence, is handing her the keys to the kingdom. Now, does that seem right to you, my friends? Does that sound like loyalty? Absolutely. I agree. Absolutely. Perhaps Edwards simply recognizes talent when he sees it. Perhaps this is why I am also in the running to become constant. And following this childish outburst, I dare say I am in the lead. Dawn. What? You're lying, of course. Which only proves my point. You cannot be trusted, Miss Burnwood. This woman will be our downfall. That is, unless we take matters into our own hands. You are heralds, sworn to protect Providence against all threats, including inside ones. I have devised a plan. Together we can make it work, but you have to decide now, my friends. Are you with me? Yes. 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 I agree. लीव बार लीव करते हैं यहाँ से। Escort Miss Burnwood to my office. I'll join you shortly. बे ये क्या? Right. Move it. Let's go. I'm warning you, Yates. This will not go your way. अभी इसको कहाँ लेके जाएंगे? डायना को। We need to get our story straight. Diana Burnwood died today by the hand of her rogue Agent 47. Revenge for her changing Get Diana. Diana को बचाना है हमने। This is what you all उसके पास जाना है हमने। ये लोग उसको मारने की तैयारी कर रहे हैं मेरे ख्याल से। कहीं लेके जा रहे हैं। यहाँ पे गार्ड हैं काफ़ी सारे। इनसे बचते बचाते हम लोगों ने जाना है वहाँ पे। डायना तक जाना है हमने, डायना तक। यहीं पे जा रहे हैं लोग सारे। यहाँ से ऊपर जाते हैं इस रूम में। रूम है कि जो भी है,
इसको लेके जा रहे हैं लोग डायना को यहाँ पे। अबे यहाँ पे ये बंदा एक है। Jeez. We might have a possible disturbance. I'm moving to investigate. We'll keep you posted. इसको जो है मारते हैं इस बंदे को। इसकी बॉडी को ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं। एक मिनट, ये उठा लेते हैं पहले। Took you long enough. Quick, clear the floor and get yourself a guard outfit. Yates won't be long. Take out the guards. यहाँ बॉडी को, एक मिनट, बॉडी को डंप करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ गार्ड्स को मारते हैं पहले, जितने भी यहाँ पे गार्ड्स हैं। एक ये बंदा है, उसको मार दिया। इसकी बॉडी को यहाँ पे डंप करते हैं इधर। दो गार्ड यहाँ रख दिए हमने। आखिरी है, इसको मारते हैं। ये भी गया। इसकी बॉडी को जो है यहाँ पे डंप करते हैं इधर, और डायना से बात करते हैं। टॉक टू डायना। से बात करते हैं। Good. I was beginning to worry. Were you? No. Listen up, 47. Yates will be here shortly. He'll have his thug courtesan do his dirty work, but he won't pass up on the chance. यहाँ वेट करते हैं इसका। And a monologue. So, private space, kill room decor. Exactly. We won't get another shot at this. Now sit down and blend in. When I provide a distraction, you just be ready to move. यहाँ वेट करते हैं उसका। येट्स जो भी इसका नाम है, जो डॉन है, यहाँ पे आने वाला ही है वो अपने गार्ड्स के साथ। उसका वेट करते हैं हम लोग। ये आ गया। Corvo, pick up your damn phone. Plan B is a go. I repeat, Plan B is a go. Start prepping the crime scene like we discussed. Remote, staged accident. Cortazar will bring the package. Get it done. Miss Burnwood. You rolled out the red carpet Watch just for me. the Dawn. You shouldn't have. So confident, even in defeat. confrontation. Suppose you're not used to danger, always safe behind your screens. Just tell me one thing before we part ways. Why me? Why you? Why would Edwards trust you? Please. It will keep me awake at nights, and I'm 65. I get up 4 times to piss his भी देखते हैं क्या होता है। Oh, it's simple, really. Edwards is proud. He considers himself the cleverest man alive, and yet we tricked him on Isle of Scale, and it's eating him up. He needs to win. Full, unequivocal victory. My recruitment. अगर इसको शूट करेंगे तो ये इसके ऊपर गिर जाएगी यूं आके। You're right about one thing. और Yeah, I'm all ears. गए Turns out this woman will. गए तीनों गए। हाइड द बॉडी। बॉडी को हाइड करते हैं यहाँ पे। Well done, 47. Better get rid of the body. ये फुल हो Before they come looking. गए। यहाँ पे डंप करते हैं यहाँ पे एक When you're बंदा। done, meet me on the dance floor. Oh, and dress appropriately. ड्रेस अप्रोप्रिएट, लोकेट एग्जिट।
अबे ये कहाँ चली गई एकदम एकदम वहाँ पहुँच गई है। ड्रेस, अच्छा ड्रेस चेंज करते हैं अब। जो हमारे बंदे का ओरिजिनल ड्रेस है 47। यहाँ से निकलते हैं। मिशन स्टोरी कंप्लीटेड। अब जाते हैं वहाँ डांस फ्लोर पे डायना के पास। ट्रेस पासिंग, अबे यार बे भाई, इनको डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से निकलना है हमने किसी तरह से। डांस फ्लोर पे जाना है। Got it. Ah, nice. अबे ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? यहाँ से निकलना है हमने किसी तरह से। यहाँ गार्ड्स ही गार्ड्स हैं चारों तरफ। यहाँ से आना है, यहाँ से। डांस फ्लोर कहाँ पे है? यहाँ पे। वो खड़ी हुई डायना से जाके मिलते हैं। विद डायना डांस करना है, डांस। It's done. Now what? Now, we strike at the heart. Edwards. You know how to find him, don't you? Why, Edwards finds you, 47. He is untraceable, and he never lets you forget it. He is cocky, and that will be his downfall. What's the plan? Too many eyes. Meet me at the Olive Grove at sunset. One last tango, 47. वन लास्ट टैंगो। और ये मिशन कंप्लीट हो गया हमारा। फेयरवेल। नेसेसरी इविल। How did you know? Your deal. That kind of power always comes with a price. What's yours? I think you know. ये क्या? I am sorry. This is a necessary evil. उसको धोखा दे दिया। What have you done? Ether brand neurotoxin. Neurotoxin. Transfers by touch. See, Edwards learns by his mistakes, 47. And as you've clearly demonstrated, brute force is futile. उसको मार दिया। It was the only way. To get this close. My family. I know what you did. After all these years, I finally know. I am sorry. You didn't have a choice. I did. Providence used you, but I'm no better.
All I saw was a blank slate, a weapon to wield. I told myself it was what you needed, but people aren't meant to be controlled. This is a kindness. Goodbye, Agent. Goodbye, Agent 47. तो ये था आज का गेम प्ले हिटमैन 3 का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गेम प्ले पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें। और ये जो लास्ट मिशन है हिटमैन का, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्ले करूँगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।